Good morning, students. Last class में हम डिस्कस करथिले about the female gametophyte. Clear? तो मु pollination introduction में देइथिली तो आज हम स्टार्ट करिबा next, that is your pollination. First of all, what is pollination? तमु दिटा ड्राइंग प्लेट देखो. एटा तमरो हैला फिलामेंट, ये तमरो एंथर, ये तमरो हैला स्टिग्मा, ये तमरो हैला स्टाइल, ये तमरो हैला ओवारी. ओके, तो ए भीतर तमरो कोन अछि पोलन चेंबर भीतर पोलन ग्रेन अछि. तो तमरो जो प्रोसेस रे पोलन ग्रेन रो ट्रांसफर होछि स्टिग्मा पाखु ताको हमें कोजे कोन बोले pollination. That is your stamen, ये तमरो कोन हैला pistil. Okay, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एटा लिखि दोछि मु ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Is known as pollination. Clear? बुझा पड़ला. तो ए जो ट्रांसफॉर्मेशन पाई कौन होची तमरो एजेंट रो रिक्वायरमेंट होची. तो बिफोर गोइंग टू pollination we have to discuss about the pollinating agents. Clear? Abiotic and biotic. Abiotic रे दीटा अछि बोले anemophily and hydrophily. Biotic रे कागा द्वारा हेबोछि bud, insect, snail, snake. These are the biotic agents. Anemophily is nothing but your pollination through wind is known as anemophily. Hydro means water. Water माध्यम से तब हमें पूछे hydrophily. Bud is your ornithophily. Insect, that is your entomophily. Snail, that is your malcophily. Clear? ये सब तमर होची pollinating agent. एबे हम पहले डिस्कस करिबा what are the structures of flowers and types of pollination. देखो पहले तमरो दी टाइप रो फ्लावर रहउची प्लांट रे. कोन कोन monoecious फ्लावर. तो monoecious फ्लावर कोन जदि तमरो मेल सेक्स organ and female sex organ born on same flower. Mono means what? Your single गोटे फ्लावर रे जदि बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लोग तब हम कोन कहछे मोनोएसियस बा तार आउट ना आसे जो bisexual. Bi means both male and female sex organ born on the same flower. Similarly, second one is your dioecious. एडी तमरो कोन होची बिले मेल सेक्स organ and female
sex organ born on different flower ताको हमें कौन कहे डाइएसियस ताहले एटे कौन हम तुमरो ना द डाइएसियस फ्लावर्स आर unisexual that means they bear either male or female but in bisexual both male and female are present on the same flower concept clear हैला बुझा पड़ला एबे डिस्कस करिया पिला हम कोन pollination रो types जो pollination अछि बिले types रे दे टाइप रो अछि first one is your self pollination and second one is your cross pollination self रो अगेन दीटा कैटेगरी अछि ऑटोगामी और जिटेनोगामी एको आम कौन कहूचे जेनोगामी भी कहूचे बा और एलोगामी भी कहूचे क्लियर एबे हमें देखिबा सेल्फ पॉलिनेशन कौन व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन इन द सेंस व्हाट जदी गोटे फ्लावर बाइसेक्सुअल हेतिबो सेम फ्लावर सेमानकर पोजीशन ए टाइप रो थिबो जे से फ्लावर रे तमरो एंथर रो डेसेंस हबो एंथर रो वाल रप्चर हबो सेटू पोलन रेन रिलीज हबो आ सेम फ्लावर रो तमरो कोन हबो ना पिस्टिल रे से आसी की डिपॉजिट हबो दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन रो की पॉइंट्स कोन कोन दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन सेम flower must be bisexual no agents ऑटोमेटिक हे परिबो एजेंट की आवश्यकता नहीं क्लियर तो ए जो फ्लावर जा सब होची दे आर क्लोज्ड टाइप फ्लावर्स नॉट ओपन टाइप क्लोज्ड टाइप फ्लावर क्लियर दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन तो ए सेल्फ पॉलिनेशन को हम दीटा कैटेगरी डिवाइड करछे one is your autogamy and another one is your जिटेनोगामी तो जदी सेम फ्लावर ले कोन होला सेम प्लांट भी रहइबो क्लियर अब ऑटोगामी रे कोन बिले सेम प्लांट बट एटे तमर कोन होची सेम फ्लावर आल्सो क्लियर नो एजेंट्स बट जिटेनोगामी रे कोन होची सेम प्लांट जिटेनो रो जो टर्म रो मीनिंग होची नेबर व्हाट नेबर तो एटे फ्लावर सेम होनी सेम प्लांट होची बट डिफरेंट फ्लावर दैट मींस एटे कोन होची ना तमर जेतलो पोलन ग्रेन टा मैच्योर होची से कोन करची ना तार पडिसा फूल जो रहउची तार से फूल रो कोन होची ना पिस्टिल रे जाके से डिपॉजिट हो सेम फ्लावर रे होवनी सेम प्लांट बट जिटेनो मींस कोन पडिसा दैट इज योर नेबर नो एजेंट आल्सो क्लियर but here what happened in xenogamy or allogamy here the concept is totally reverse that means here agent required kahin agent required hobo because here plant is different गोटे प्लांट हमर एटा अछि आ गोटे प्लांट 500 मीटर दूर रे अछि तो से 500 कवरेज करे पे त कोन दरकार एजेंट रो आवश्यकता दरकार एबे एजेंट हमर कोन होई पारे दैट मे बी एबायोटिक होई पारे और बायोटिक होई पारिबो एबायोटिक मींस नॉन लिविंग बायोटिक मींस हमर कोन लिविंग एबायोटिक रे हमर तीनटा अछि एनामोफिली एंड हाइड्रोफिली एनामोफिली मींस wind and hydrophily means water
बट आइथिले कोन होउची पले तार एडवांटेज डिसएडवांटेज कंट्रीवेंसेस सब हमें डिस्कस करा लेटर ऑन वी जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज एलोगामी और xenogamy तो हियर द कांसेप्ट इज व्हाट दैट the transfer of pollen grain from one plant to another plant simple definition but here the transfer of pollen grain from one flower to another flower of same plant or either different plant if it is same transfer of pollen grain from one flower to another flower either of same plant or different plant नहीं एटा तो plant same आ होची ना जदि सेम फ्लावर रहला दैट इज ऑटोगामी डिफरेंट फ्लावर रहला मन तमर कोन जिटेनोगामी तो एटे प्लांट सेम रहउची फ्लावर सेम रहउची एटे प्लांट सेम फ्लावर अलगा एटे टोटली कांसेप्ट अलगा दैट इज योर दीटा तमर प्लांट रो एटे यूज होउची दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सो वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन माने ओटे सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर पे कोन कोन आवश्यकता रहउची then advantages and disadvantages okay contributions of self pollination contributions of self pollination तो कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहियार अछि सेल्फ पॉलिनेशन पाए क्लियर बा जाको हमें कहूचे अडैप्टेशन कंट्रीवेंसेस और अडैप्टेशन तो नॉर्मली पीरियड है दीटा जिंस रहबा दरकार फर्स्ट वन इज योर homogamy clear what is your homogamy here what happened stamen and carpel or pistil mature at the same time बाबा तमर पहले एंथर रो मैच्योरेशन हैला मैच्योर हैला एंथर रो वाल डेसेंस हैला एग्जैक्टली सेम टाइम रे पिस्टिल रे भी तमर मैच्योरेशन हे जइथिबो सो दैट तमर जेतले एंथर रो पोलन ग्रेन तमर इमर्स आउट होउची बाहर को बाहरुची त पिस्टिल ताको कैरी करि पारिबो त पिस्टिल रे तमर लैंडिंग प्लेटफॉर्म किए दैट इज स्टिग्मा स्टिग्मा हैज ए feathery leaf like structure and sticky surface that's why the pollen grain released from the anther are directly in contact with the stigma and the stigma has that much of power or ability to recognize whether the pollen grain is of same type or wrong type if it is same type then it started germination and the pollen tube formation takes place and apart the pollen tube formation takes place the pollen tube has to grow and to reach with the ovary and inside the ovary there are female gametes and inside the pollen tube there are male gametes and the fusion of male gamete and female gamete takes place that leads to formation of zygote that we will discuss in the formation of kono process that is fertilization then after that we will discuss the post fertilization here you have to remember that the homogamy in the sense what both the stamen and pistil mature at the same time so that it is easy for pollination okay got it this is what about your homogamy next second one is your cleistogamy cleistogamy means what here what happened the flowers are closed type
You have to remember two types of flower. One is clistogamous flower and another one is your chasmogamous flower. Clistogamous flower in the sense these flowers are open type. Sorry, these flowers are closed type and the chasmogamous flowers are open type. Closed type in the sense what? If the flowers are closed type, then there is avoid of contamination. That means another flowers not has the power to come interact with the same flower. That means closed type, here the same flowers stigma has received the capacity of the same flowers anther. That is the only concept. Here what happened? Flower is your closed type. That means what? Any idea? These flowers are forced to follow self pollination because they are not willing to wait for the agents or pollinators. No requirement of pollinators. Okay, concept clear हला बुझा पड़ला. ଏବେ डिस्कस କରିବା ପିଲା ଆମେ advantage and disadvantage of pollination. ଏବେ ତମ ମାନେ को पिले advantage कोन कोन आस्पेरियो pollination रो कौन कौन advantage आस्पेरियो. What are the advantages of self pollination? First one is your what? No requirements of pollinators. That means what? Or agent. That is what your pollinating agent. Clear? Because what happened in this case? The pollination takes place in the same flower. That's why the pollen grain does not have to go into somewhere else. Clear? Then second point what? If the pollen grains fall on the stigmatic surface of the same flower, that means there is no wastage of pollen grain. No wastage of pollen grain. This is the second advantage. Then third one what? If the pollen grain has to transport, the transporting agents are migrated to flower कौन पाए जानती पिले बे महू माछी हो किंबा बहर हो से फुल टू फुल बुली 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 जाई तमर महू कलेक्ट करूची हानि तो से फुल प्रति अट्रैक्ट कौन पाए होची तो से फुल जा तमर लार्ज साइज रही थिबे सेंटेड ही थिबे कलरफुल ही थिबे अट्रैक्टिव ही थिबे सो दैट इंसेक्ट अट्रैक्ट होंती बट एडे सब जिंस आवश्यकता नाही. दैट मींस flowers need not have to be scented, not large sized or
not attractive. Not attractive. Clear? ଆଉ କଣ advantage ହେଇପାରିବ? जेहेतु तुमरो एटे सेल्फ पॉलिनेशन रे सेम प्लांट रो ही तुमरो जहा कि जिंस होला, दैट मींस ये प्यूरिटी मेंटेन कला. तो सेल्फ पॉलिनेशन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. हेल्प्स in maintenance of purity. Clear? This is what about your advantages of self pollination. Next we will discuss about the disadvantages also. First one is your what disadvantage है कौन होची बोले सेडे बारंबार पॉलिनेशन है बारंबार फर्टिलाइजेशन है तो कौन है प्रोजेनी becomes offspring जो that becomes weaker एज प्रोजेनी बस आपको मैं कुछ offspring progenies becomes weaker. Clear? Second disadvantage is कौन? Useful characters are not introduced. Useful characters are not introduced. Clear? Third disadvantage is your what? Successive generation show decreased resistance to disease. Though progeny becomes weaker, जो next generation आसीबो तारो से कौन करिवो ना disease resistance को weaker एगी जिवो. Successive generations becomes weaker to disease resistance. These are the disadvantages of self pollination. तब हम आगु जीवा, that is your cross pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन रो कंट्रीब्यूशंस कोन आउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस कोन डिस्कस करियो. ओके contributions of cross pollination. सेल्फ pollination क्लियरली बुझा पड़ला हो ना नहीं ना कोन डाउट अछि बुझा पड़ला ना नहीं बिले तो फर्स्ट कोन कंडीशन declining or unisexuality. First रे कोन ना flower must be unisexual. Flowers must be unisexual. Clear? Second one is your what?
Dichogamy. Here what happened? Though it is unisexual, there is no time limit of maturation of stamen and maturation of pistil. That means stamen and pistil mature at different time. That is your dichogamy. If it mature at same time, that is your called homogamy. Stamen and pistil mature at different time. Here what happened? Two concepts arise. What are that? That is, if the androecium is mature earlier than the gynoecium, androecium is your what? That is your male part. If the androecium is mature earlier than gynoecium, that is known as protoandry. And if the gynoecium is mature earlier than androecium, that is your protogeny. Two concepts arise here. Protoandry and protogeny. That is your what? GYNY. So here what? Androecium mature earlier. Here what happened? Gynoecium mature earlier. Okay, this is what your protogeny. Next one is your hercogamy and heterostates. Hercogamy. What is your hercogamy? Here what happened? In some flowers, there is a physical barrier between anther and style. This prevents self-pollination. Physical barrier is there between anther and यहाँ पे stamen लिख देते हैं, stamen and pistil. If the physical barrier is present, automatically it prevents self-pollination. It prevents self-pollination. ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया? Then the fourth one is your heterostyle. Here what happened? The length of the style is slightly different. It differs from plant to plant. Length of the style is different. And here what happened? The flowers, that is clistogamous in your self-pollination. But in that cross-pollination, the flowers are chasmogamous. That means open type flowers. Chasmogamous. Open type. Okay. These are the contrivances of cross-pollination.
Earlier we discussed about the contrivances of self-pollination. What happened? In self-pollination we discussed 2 points. One is your homogamy and another one is your what? Chasmogamous. But in cross-pollination we discussed around 4 to 5 points. What are that? These are, first one is your what? That is your dichogamy, decline, that is your unisexuality, and the third one is your hercogamy, heterostyle, and that is your finally chasmogamous. Clear? Next is your advantage and disadvantage of cross pollinations. Advantages. Okay, it's already 40 minutes. That's why the advantage of cross pollination, self pollination we will discuss in the next class. Okay.